Hello friends, you are most welcomed in निरंकारी वीडियो चैनल। इस वीडियो लिंक में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंतर्गत हम लोग इस लिंक में डिफेक्ट इन सॉलिड्स पे चर्चा करेंगे। डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स dose. As discussed in the beginning of this unit, in a crystalline solid there is a regular arrangement of constituent particles. बताया गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होता है, उसके घटक कण एक निश्चित पैटर्न में अरेंज होते हैं और ये अरेंजमेंट व्यवस्था लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है। However, this arrangement is generally not found to be perfect. This is because a solid contains a large number of small crystals and some of these may not have a perfect regular arrangement of the constituent particle. यानी कि बहुत सारे यूनिट सेल एक लैटिस में होते हैं और कभी कभी होता क्या है कि इन लैटिस सेल्स की पैटर्न व्यवस्था में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। दिस हैपेंस व्हेन क्रिस्टलाइजेशन टेक्स प्लेस एट फास्ट और मॉडरेट रेट बिकॉज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मे नॉट गेट सफिशिएंट टाइम टू अरेंज देमसेल्स इन अ परफेक्ट ऑर्डर। इतनी फास्ट अरेंजमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने लोकेशन पॉइंट पे अरेंज्ड नहीं हो पाते हैं। इवन इफ वी प्रिपेयर सिंगल क्रिस्टल बाय कैरिंग आउट द क्रिस्टलाइजेशन एट एक्सट्रीमली स्लो रेट, दिस सिंगल क्रिस्टल में नॉट हैव ए परफेक्ट अरेंजमेंट। यानी कि पूरे क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल की एक समान व्यवस्था नहीं हो पाती है, कभी कभी ऐसा होता है। तो इस तरह के डिफेक्ट जिसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एट देयर लोकस पॉइंट इज नॉट करेक्टली फॉर्म्ड, तो उसमें क्या होती है, डिफेक्ट या त्रुटियां पैदा हो जाती हैं। तो डिफेक्ट इन सॉलिड की जो डिफिनीशन आ रही है, एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड, एनी departure from perfectly ordered arrangement of constituent particle, arrangement of the constituent particle in a crystal is called imperfection or defect. Imperfection or defect यानी कि क्रिस्टल लैटिस की व्यवस्था में यूनिट सेल में जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने एग्जैक्ट लोकेशन पॉइंट पे सिचुएटेड नहीं हो पाते हैं, तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उस सब्सटेंस के नॉर्मल स्ट्रक्चर से डिफर हो जाती है और ये आपका डिफेक्ट कहलाता है। द डिफेक्ट में आल्सो अराइज ड्यू टू The defect may also arise due to heat absorbed by the crystal. Heat absorbed by the crystal from the surrounding, from the
surrounding are due to presence of impurities. Due to presence of impurities in the crystal. In the crystal. There are two types of defects. There are two types of defects named point defects and line defects. Point defects and line defects. When the deviation from the ideal arrangement, when the deviation from ideal arrangement around a point, or an atom in a crystal, an atom in a crystal, the defect is called point defect. The defect is called point डिफेक्ट, यानी कि लैटिस पॉइंट से कोई परमाणु या आयन क्या हो जाता है, मिस कर जाता है, गायब हो जाता है, या अपनी जगह छोड़ करके इंटरस्टिशियल स्पेस अंतराकाशी अवकाश में चला जाता है, यानी कि उसकी जो नॉर्मल सिचुएशन है वहाँ से डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरह का जो डिफेक्ट है या त्रुटि है या जो दोष है, इसको हम पॉइंट डिफेक्ट या बिंदु दोष बोलते हैं। व्हेन द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट, व्हेन द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल arrangement exist in entire row, exist in entire row of a crystal, then the defect is said to be लाइन डिफेक्ट, यानी कि एक क्षैतिज तल पे, एक लाइन पे जितने के जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो सभी अपने उस लाइन के लोकेशन को छोड़ करके किसी दूसरे पॉइंट पे चले जाते हैं, या तो क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह का डिफेक्ट आपका ये लाइन डिफेक्ट कहलाता है। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष के प्रकार। नंबर फर्स्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, stoichiometric defect. Number second, non-stoichiometric defect, non-stoichiometric defect. And number third, impurities defect. Now we'll see what is a stoichiometric defect या रस समीकरण मितीय दोष।
first is stoichiometric defect, रस समीकरण मितीय दोष. If imperfection in the crystal are such that if imperfection in the crystal are such that the ratio between cations and anions, the ratio between cations and anions remains constant, that is stoichiometry of solid is not disturbed. That is stoichiometry of the solid is not disturbed. यानी कि उसका जो जनरल फार्मूला है वो डिस्टर्ब नहीं हो पाता है. Stoichiometric defects are also called stoichiometric defect is also called intrinsic defect, or thermodynamic defect, or thermodynamic defect. These defects are of the following two types. These defects are of two types. Number first, vacancy defect. Number first, vacancy defect, and number second, interstitial defect. Number second, interstitial defect. So first is vacancy defect. When in a crystalline substance, when in a crystalline substance, some of lattice sites are vacant. Some of lattice sites are vacant. क्या होते हैं? खाली होते हैं. The crystal is said to have. The crystal is said to have vacancy defect. Vacancy number second, interstitial defect. Interstitial defect. Interstitial
defects. When some extra constituent particle are present, when some extra constituent particle, extra constituent particle are present in the interstitial sites, in the interstitial sites यानी कि जब क्रिस्टल में कुछ घटक क्या होते हैं, वाइड्स के अंदर, अंतराकाशीय स्थान के अंदर होते हैं, द क्रिस्टल इज सेड टू हैव, द क्रिस्टल इज said to have interstitial defect. This defect result in increase in the density of substance. This defect result in increase in the density of substance. इस डिफेक्ट के कारण पदार्थ का घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. नंबर 3, शॉटकी डिफेक्ट. नंबर 3, शॉटकी, SCHOTT केवल, शॉटकी defect. If an ionic crystal of the type AB, if an ionic crystal of type AB, equal number of cations and anions, equal number of cations and anions are missing from their lattice site, are missing from their lattice sites. So the electrical neutrality is maintained. So the electrical neutrality is maintained. It is called Schottky defect. It is called Schottky defect. Schottky defect में क्रिस्टल लैटिस के अंदर से बराबर मात्रा में धनायन और ऋण आयन क्रिस्टल लैटिस से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं. इस तरह से क्रिस्टल लैटिस के कुल आवेश पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा न्यूट्रल बना ही रहता है. लेकिन होता क्या है कि शॉटकी डिफेक्ट में धनायन और ऋणायन के निकल जाने के कारण उसका जो द्रव्यमान हो जाता है वो नॉर्मल क्रिस्टल लैटिस के द्रव्यमान से कम हो जाता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, सेम बना रहता है. इस तरह से द्रव्यमान के कम होने और वॉल्यूम के सेम बने रहने के कारण शॉटकी डिफेक्ट में उसकी जो डेंसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है. इन शॉटकी डिफेक्ट the density of the crystal
decreases. Number second, Frankel defect. Frankel defect. If an ion is missing from its lattice site, if an ion is missing from its lattice sites and it occupies the interstitial space. Electrical neutrality as well as stoichiometry. Electrical neutrality and stoichiometry मेंटेन। होता क्या है फ्रैंकल डिफेक्ट में कि कोई भी घटक कण, जैसे जो कैटायंस है पॉजिटिव चार्ज जिसकी साइज छोटी होती है, अपने लैटिस पॉइंट से हट करके क्रिस्टल में पाए जाने वाले वॉइड्स के अंदर क्या करता है, चला जाता है। तो वह घटक कण क्रिस्टल से अपने लैटिस पॉइंट से हटता तो है लेकिन क्रिस्टल के बाहर नहीं जा पाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में रहता है। इस तरह से क्रिस्टल लैटिस का मास और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट बना रहता है। न्यूट्रलिटी भी क्या होती है, मेंटेन्ड बनी रहती है। उसकी स्टोइकियोमेट्री रस समीकरण मितीय संरचना भी होती है, मेंटेन्ड होती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अपने लैटिस पॉइंट से जो घटक कण निकला वह जो है क्या होता है, लैटिस पॉइंट से हट करके वॉइड्स के अंदर, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो चाहे वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो, उसमें चला जाता है। तो इस तरह से उसका मास और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट बना रहता है, इसलिए फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों अगले वीडियो लिंक में हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो लिंक में इतना ही, धन्यवाद।